हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोग के साथ एक सिंपल रेसिपी लेकर, जो कि बहुत ही खाने में टेस्टी होती है और ये राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है, पकौड़े की कड़ी। आप इसे ज़रूर बनाएं और खाने। ये मैंने इसे बहुत सिंपल और इजी वे में बनाया है, तो आप इसी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा। फिर स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए पहले मैंने लिया है बेसन। मैंने लिया है 2 बड़े टेबल स्पून बेसन। उसमें मैं Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do, that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है और ये हमारा ग्रेवी अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख रहे हैं ये कितना टेस्टी लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे सभी मसालों का एक तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल। उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हींग। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मेथी के दाने, 3 लाल मिर्च सूखी हुई, कुछ राई के दाने। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ कड़ी के पत्ते और इन सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन मसालों का एक अच्छा सा तड़का लगाएंगे, जो हमारा बैटर बना है उसमें को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं हमारे पकौड़े कितने टेस्टी बने हैं और फूले हुए बने हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा गाइस। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।